Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, as we all are aware that on Sunday at 8 p.m. we are having a static GK revision series. So we will continue from there where we have left in the last class. So am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes. Okay, so let us start. शुरू किया जाए. Is my slide visible? If yes, then please write yes. So in the last class we were here in the question number 17. ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे कहीं पे थे, है ना? That we are talking about Alzheimer disease, right? That which body part is Alzheimer's disease associated with, है ना? So which is related with, it discussed related with brain or memory, right? So it causes memory loss, especially it happens during old age people. So B is the right answer to this question. Okay, Alzheimer's disease is a brain disorder that slowly destroys memory and thinking skills. Okay, so this you should be knowing. And we were discussing actually the PYQs of MHSET exam, which can be helpful in other exam also. I have told you multiple times that previous year questions of one exam is repeated in another exam. This happens, I have seen. Okay, why? Because the question maker, before making a question, they decide that, okay, let's see the other exams questions and how they are asking it, and they repeat it. We have discussed so many times in our classes that PYQs are directly or indirectly repeated from other exams also. So let us begin. Let us move on to the next question. Which organization gives a status of heritage sites? ये तो बहुत आसान है. I hope you all are aware of this and you all should be answering. Status of heritage sites: SAARC, ASEAN, UNESCO, UNIDO. Please tell me. This is very easy question, so I believe you all should be answering it. Yes, Johnny Jones, you are right. UNESCO, इसलिए हम कहते भी हैं, इसका नाम ही लिखते हैं UNESCO World Heritage Sites, है ना? Now please tell me, where is the headquarter of UNESCO and how many UNESCO World Heritage Sites are there in India? Please tell me. नो न्यूज़पेपर एनालिसिस टुडे. नहीं, कैप्री संडे को हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं करते बिकॉज संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं. ठीक है, यू विल नॉट फाइंड एडिटोरियल्स, द हिंदू एडिटोरियल्स. So that is why you can skip the Hindu newspaper reading on Sunday. ठीक है, बहुत कुछ खास आर्टिकल, कुछ फर्स्ट पेज में कुछ आर्टिकल्स आती है, you can read it. But Sunday newspaper, the Hindu newspaper is not important from your exam perspective. ठीक है, because there is no editorial. तो क्यों टाइम वेस्ट करोगे ना? Okay, please tell me. UNESCO का हेडक्वार्टर कहाँ है and how many UNESCO World Heritage Sites are there in India? UNESCO का headquarter is in? I'm waiting for the response. Paris, France, not Geneva. Paris, France. ठीक है. And UNESCO World Heritage Sites. How many UNESCO World Heritage Sites are there in India? बहुत important है. UNESCO बहुत important होता है. World Heritage Site is very very important. Cutting across all the exam. 43 actually. So how many cultural site? Cultural sites, natural sites, and mixed. कितने cultural sites है, कितने natural sites है और कितने mixed sites है? Please tell me. So there are 35 cultural sites as far as I could remember. 35 natural sites are 7 and mixed site is 1. That one is, ये one कौन सा है? This I have taught in paid classes. I still remember. Yes, Mahendra, good evening. Welcome to the class. Please answer my question. We are having 43 UNESCO World Heritage Sites, 35 cultural, 7 natural and 1 mixed. What is that one mixed? कौन सा वाला है वो? कंचनजंगा, है ना? National Park. Okay, let's move on further. Anna, National Youth Day is the birthday of which famous personality? And this you all should be answering. Swami Vivekanand, Adi Shankaracharya, APJ Abdul Kalam, Atal Bihari Vajpayee.
What is the right answer to this question? Yes, Mahendra Siddhi, you are right. अनट, कब कौन सा डेट बताइए? स्वामी विवेकानंद जी, नेशनल यूथ डे, हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे. बर्थडे डेट बताइए. ट्वेल्थ जनवरी है ना? यस, कैप्री महेंद्र, यू आर राइट. नहीं, जनवरी में आता है. यस दिव्य, यू आर राइट, 12 जनवरी. ठीक है, ओके है ना. एंड आप इनका ओरिजिनल नाम जानते हैं? व्हेन ही वाज बोर्न हिज नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्ता. ये भी कभी कभी मैंने किसी किसी एग्जाम में देखा है पूछते हुए. ठीक है. इनकी एक स्पीच है, वेरी फेमस स्पीच एट वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस. ही गेव दैट स्पीच इन विच सिटी? कहां दिया था? विच कंट्री, विच सिटी? कुछ बता सकते हो? एक उनकी बहुत फेमस स्पीच है, वेरी फेमस स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंद जी at World Religious Congress or World Religious Conference. Where, which city? Chicago. Yes, Aditya, very good. So Chicago conference में, it's actually 11 September 1893. तो इसको अमेरिकन स्टाइल से कहोगे तो 9/11 होता है ये 1893, बिकॉज वो मंथ पहले लिखते हैं मंथ से, तो ये याद रखने में आसानी होगी. इस 1893 शिकागो कॉन्फ्रेंस, he gave the speech, very famous speech है ना, शिकागो में. हाँ, यूएस इज में, शिकागो ऑफ कोर्स इज देयर. यस सिद्धि, यू आर आल्सो राइट. Okay, let's move on. Dash is the only active volcano in India. 2017 के आसपास it was in the news because it had witnessed some eruption type thing. Yes, Barren Island volcano कहाँ मिलेगा? Where do we find? Which state, which union territory? हाँ, very good, Mahendra. Andaman and Nicobar Island. So D is the right answer. Yes. So here it is. This is Andaman and this is Nicobar. Andaman and Nicobar Island. ठीक है. So this is Barren Island है ना. Just east में ही पे मिलेगा of Andaman. Good. हाँ. Very good. Let's move on to the next question, which is the first country to introduce RTI bill. ये हमको शायद याद आ रहा है कि AILET या जामिया एक दो जगह और एग्जाम में पूछा है. जैसे RTI पूछते हैं, फिर लोकायुक्त जो ऑम्बड्समैन होता है वो कहां से लिया गया कॉन्सेप्ट्स. दिस आई रिमेंबर, दिस वाज आस्क्ड इन at least 2 occasions. This was asked, जहां तक हमको याद आ रहा है. RTI, right to information, originally taken from where? Yes, Adrija, Siddhi, Johnny, Joss, you are right. The right answer is Sweden. D is the right answer to this question. ठीक है. So right to information, a concept Sweden से लिया गया है, and later on it was introduced in India also. अच्छा, can you please tell me, right to information will be which type of right? Fundamental right, legal right, constitutional right? अगर ये सब 3-4 लिखें, so which one would be the best one to answer? Because there is a judgment of Supreme Court in this regard, and that is why, since the Supreme Court has said, you have to accept it. What is the answer? देखो, आप बोलोगे सर RTI Act is there, so Right to Information Act is there. It means it should be a legal right or statutory right type thing. But no, since the Supreme Court has said that RTI is a fundamental right, under which article? Under सॉफ्ट से लिख देता हूँ. RTI, right to information, is a fundamental right under Article 19. Mostly under 19, but 21 से भी ले सकते हैं, but 19 से ही जनरली लिया जाता है. ठीक है. So that is what the Supreme Court has said, and that's why we have to consider it to be a fundamental right. ठीक है. उसके बाद RTI Act was formed, है ना. अच्छा, कोई एक चीज बता सकता है? RTI Act was passed. After that, a body was made with the result of this RTI Act. What is that body called? To enforce the RTI Act, a body has been made. उस बॉडी का नाम क्या है? एक बॉडी बनाई गई है RTI Act एनफोर्स करने के लिए, उस बॉडी का नाम बताना है.
Anyone? Have you heard this name before? Central Information Commission, right? Siddhi and Adija, very good. You both are right. Central Information Commissioner, commission बनाया गया. तो उनके जो हेड होंगे उनके क्या कहेंगे? Central Information Commissioner. Yes, and there are I think somewhere around 10 information commissioners वगैरह कुछ होते हैं. मतलब Central Information Commissioner होते हैं and there are other commissioners also. ठीक है? But this is not a constitutional body. Again, this can be asked the question: which of the following is a constitutional body? This type of questions are asked in AILET. तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन is not a constitutional body because it is nowhere mentioned in the constitution. It is mentioned in RTI Act. So it is a result of a parliamentary law. So it means Central Information Commission is a statutory body. Yes, Mahendra, very good. Statutory body. Okay, so the right answer is D is the right answer to this question. Okay. Let's move on to the next one. Dash is the UN organization mandated to protect the rights of every child. Your options are UNICEF, UNIDO, UNGA, UNESCO. What is the right answer to this question? देखो अगर आपको इस सबका फुल फॉर्म पता है तो ये आप बता दोगे. यस द राइट आंसर. देखो इसको पहले अर्लियर इट्स फुल फॉर्म वाज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. ये नाम था चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. दैट वाज द नेम ऑफ यूनिसेफ. अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? अब क्या किया गया है? नाउ दे हैव शॉर्टेंड इट. सो शॉर्टेंड क्या? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कार्ड दिया, इमरजेंसी कार्ड दिया. नाउ दे एक्चुअली यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप चेक करोगे सो दे विल राइट यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ओनली, बट स्टिल दे राइट यूनिसेफ. तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में नहीं आई और ये रिमूव किया है. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो. सो द राइट आंसर इज यस न्यूयॉर्क. वेरी गुड अदिजा. न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का. ठीक है, यूएस में पड़ता है ना. यस जॉनी जोस, यू आर आल्सो राइट. ओके, let's move on further. Who is known as father of Indian Constitution? I think it's very easy. Yeah, architect of Indian Constitution. Architect of Indian Constitution, father of Indian Constitution. And I think this is the easiest question of the day. So I believe you all should be answering it. आप लोग आंसर कीजिए. Yes, Capri, Adrija, Siddhi, Mahendra, you all are right. The right answer is option C, Dr. Bhimrao Ambedkar. Yes. And what was his designation after independence? He was which minister? यानी फर्स्ट कैबिनेट में वो कौन से मिनिस्टर थे? लॉ मिनिस्टर. वेरी गुड. हाँ, यस महेंद्र राइट. हाँ, अदिजा राइट. यस कैप्री. हाँ, लेट्स मूव ऑन to the next one, the question number 24. What is the name of the vaccine developed by Bharat Biotech? तो ये old, ये PYQ है ना, तो अब कम चांस से पूछेंगे. ठीक है, because now it has become slightly old, but still if you can answer it I'll be very happy to know. This is a PYQ of CLAT also. तो उल्टा रिवर्स पूछे थे. MH सेट CLAT सब जगह उस टाइम पर ये क्वेश्चन आया था. So actually the right answer is B, but actually क्या है, we should be giving credit to both ICMR as well as Bharat Biotech. तो क्वेश्चन रिवर्स पूछा था. Covaxin has been developed by, this is a PYQ of CLAT. First they gave the option Bharat Biotech BBIL, वही भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड कुछ करके नाम है, तो भारत बायोटेक. दूसरा ऑप्शन लिखा ICMR and third option was both A and B, and fourth option was Nota, none of the above. This was asked in CLAT 2021. What should be the answer? The answer is option C. ठीक है, so it should be ICMR को भी क्रेडिट देना है, सिर्फ भारत बायोटेक को नहीं क्रेडिट देना है. ठीक है, because of course both have made it, so B is the right answer. है ना. So the next is what is the full form of ISRO? ये भी previous year question है. You won't believe, but I think MX set का है ना. So these types of easy questions are also asked sometimes. जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछेंगे है ना, इसरो का पूछ दिया फुल फॉर्म,
सो और हेडक्वार्टर ही बता दीजिए साथ में, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर। कुछ लोग ऑप्शन बी मार्क कर दिए, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल लिखा है और यहाँ पर इंडियन लिखा है। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, राइट? इट्स अ स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, इट्स अ प्राउड ऑफ इंडिया, राइट? सो इंटरनेशनल तो होगा नहीं। अगर आप सी और डी में कंफ्यूज कर जाते तो भी मैं मान लेता, बट बी और सी में क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो सी इज द राइट आंसर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। हेडक्वार्टर्स इन बेंगलुरु, नॉट श्रीहरिकोटा, राइट? हाँ, ये भी मैं बताता हूँ, बिकॉज होता क्या, देखो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। फिर एक HAL होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विच मैन्युफैक्चर्स एरोप्लेन और फाइटर जेट, आई वुड से फाइटर जेट, ठीक है? HAL का हेडक्वार्टर है। ये PYQ है क्लैट 2020 का, है ना, कि इंडिया में एरोप्लेन फाइटर जेट्स कौन सी कंपनी बनाती है, विच कंपनी इन इंडिया मैन्युफैक्चर्स फाइटर जेट्स? सो द आंसर इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दैट इज आल्सो हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर, ठीक है, और बेंगलुरु। हाँ, yes, Sriharikota is the place where we launch a satellite, right? So basically headquarters is in Bengaluru, but ISRO launches most of the satellite from, देखो मैं बताता हूँ, this is South India, like this. So somewhere here you will find Bengaluru in the state of Karnataka, and somewhere here यहाँ पर आपको मिलेगा Sriharikota. Actually it is called as Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, ठीक है, SDSC, ठीक है। एंड सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली इन आंध्र प्रदेश स्टेट। यस, वेरी गुड महेंद्र, हाँ, ऑन साइट, गुड। तो ये सब पूछ देते हैं एग्जाम में कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इज इन विच आइलैंड, विच स्टेट, है ना? पीपल गेट कंफ्यूज कि तमिलनाडु है कि आंध्र प्रदेश है, सो यू शुड रिमेंबर इट इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ NCW? एंड इज इट अ स्टैचुरी बॉडी और अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? ये AILET का फेवरेट क्वेश्चन इस टाइप में पूछते हैं कि स्टैचुरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लीगल बॉडी, इस तरह का क्वेश्चन आया है, ठीक है? NCW, I am waiting for the correct response. Yes, Siddhi Vij, you are right. The right answer is D, National Commission for Women. ये नाम नहीं सुना कभी आपने? Whenever any crime against women happens or anything against women, let's say objectification of women happens or something like that is in the news, the National Commission for Women is supposed to come up and take action against it, right? I'm sure you must have heard, है ना? ये आपने नाम सुना होगा, National Commission for Women का। Is it a statutory body, constitutional body, कौन सी बॉडी है ये? It's a statutory body, right? Mahendra, you're right. Statutory body है. Yes, it is formed as a result of a parliamentary law. ठीक है? Now मैं कुछ और बॉडी पूछता हूं, जैसे एक और है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ये स्टैचुटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? Then we are having National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribe, National Commission for Backward Class. Okay? बताइए कौन कौन से इसमें स्टैचुटरी, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है ये, नेशनल कमीशन फॉर मेन नहीं है, कोई मेन के लिए नेशनल कमीशन नहीं है करेंटली। यस, वेरी गुड। इट इज ऑल्सो अ स्टैचुटरी बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज ऑल्सो अ स्टैचुटरी बॉडी। ये तीनों को किस कैटेगरी में? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास। ये है आर्टिकल 338, ये 338 कैपिटल A और 338 कैपिटल B, as far as I could remember. So these three are constitutional bodies mentioned in the Indian Constitution. ये वाला जो लास्ट वाला नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये 3-4 years back it was made constitutional body. Before that, National Commission for Backward Class was a statutory body.
तो पहले ये स्टैचुटरी बॉडी था, लेकिन कुछ साल पहले इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया. ठीक है. So these three are constitutional body. National Commission for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Backward Class. ठीक है. National Commission for Minorities is a statutory body and women के लिए भी statutory body. It is not mentioned in the constitution. Okay, why I'm saying because if you are attempting AILET, then you have to be careful. ऐसे पूछते हैं कभी-कभी. ठीक है. और CLAT नहीं पूछ सकते, of course, no doubt. The next is BCG vaccine is used for what? BCG vaccine. Tuberculosis, meningitis, scurvy, lung cancer. What is the right answer? हाँ, बहुत फेमस है एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए, स्पेशली चाइल्ड के लिए ना. हाँ, so A is the right answer. Very good. You all are right. है ना, टीबी के लिए यूज होता है, आपने सुना होगा ना. So that is what you should be knowing. अच्छा, पता है ये सब स्कर्वी वगैरह पे क्वेश्चन आता है सीयूईटी में. चलो मैं पूछता हूं, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच डिजीज? ये सीयूईटी में पूछते हैं अक्सर, बिकॉज मे बी कुछ लोग सीयूईटी भी दे रहे होंगे. स्कर्वी इज अ डिजीज. स्कर्वी में होता क्या है, जो दांत के आसपास गम होता है उसमें इन्फेक्शन होता है. सो इन्फेक्शन इन द जॉज और लेट्स से गम अराउंड द टीथ. ठीक है, वो रेडिश टाइप का हो जाएगा. स्कर्वी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? वेरी गुड आदिजा, विटामिन सी. गुड. यस जॉनी जोस, यू आर राइट. सिद्धि, हाँ, विटामिन सी की मोस्टली कमी से होता है. ठीक है. और विटामिन सी कहाँ मिलेगा आपको? मान लीजिए गॉड फॉरबिड किसी को स्कर्वी हो गया तो क्या करेगा? लेमन है ना, ऑरेंज, साइट्रिक एसिड है ना, टाइप थिंग में. वैसे दवा भी लोग लेते हैं, बट जस्ट फॉर नेचुरल अगर आपको लेना तो लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा में विटामिन सी होते हैं. ठीक है. खैर, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा एमपीज एंड व्हाट इज द मिनिमम एज? दोनों बता दीजिएगा. 5, 4, 7, 6 ईयर. हाँ, साइट्रस फ्रूट, राइट महेंद्र. जो लेमन या ऑरेंज होता है वो साइट्रस फ्रूट में आता है, राइट. हाँ, राज्यसभा मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है और मिनिमम एज? हाँ, 6 years is the tenure. D is the right answer. हाँ, 5 years for Lok Sabha, right? हाँ, 5 year 35 age. 30 years. Minimum age is 30, not 35. ठीक है. अच्छा, लोकसभा के एमपी के लिए मिनिमम एज कितना होता है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ लोकसभा एमपी? मिनिमम एज आई एम आस्किंग, टेन्योर नहीं. हाँ, 25. वेरी गुड महेंद्र. हाँ, 25 years. हाँ, 25 फॉर लोकसभा कैंडिडेट. अच्छा, 35 years मिनिमम एज किसका होता है? In which case, in which constitution post you need minimum 35 years? Minimum age. हाँ, प्रेसिडेंट, गवर्नर इन लोग का होता है. हाँ, प्रेसिडेंट वगैरह का. आई थिंक गवर्नर का ऑल्सो है ना, 35. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का कितना होता होगा मिनिमम एज? इज इट रिटन समवेयर? सोचो, थिंक, है ना. हम लोग इसमें सिर्फ लर्न नहीं करें, सोचना भी है थोड़ा कि अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. पता नहीं सर, बट आप the information is available on the screen. With the help of that information you can reach to the answer. चलो मैंने एग्जांपल 25 to 30. नहीं, मिनिमम एज 25 to 30 कैसे हो? कोई एक एग्जैक्ट होगा ना कि इससे कम नहीं होना चाहिए. तो 25 to 30 तो रेंज हो गया. Minimum age I'm asking and you are giving a range. Yes, Mahendra, right, 25. देखो, if you want to become a prime minister, you should have at least either can be a Lok Sabha MP or a Raj Sabha MP or eligible for that. तो यहाँ 30 मिनिमम, यहाँ 25 मिनिमम, इसलिए मतलब है कि आप 25 पे बन सकते हो. ठीक है. तो मिनिमम एज पूछा जाएगा तो 25 आंसर करना होगा. ओके, फॉर प्राइम मिनिस्टर. But for president and governor, these are 35. अच्छा, एक चीज और. What is the minimum age? Let me see how many of you can answer. For a person to become a Supreme Court judge. बहुत अच्छी किस्मत हुई.
Someone is writing कि अगर अच्छी किस्मत हुई तभी 25 years में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे. Yes, because it is very less likely that a person can become practically, है ना, at 25 years someone becomes prime minister. इंडिया में तो नहीं हुआ है, बट फॉरेन कंट्रीज में कहीं कहीं होता है कि बहुत कम एज के बन जाते हैं. It happens. Minimum age for a person to become a Supreme Court judge 50s में. लीगल इससे बताना है, प्रैक्टिस में नहीं बताना कि हाँ जनरली 50 प्लस. देखो, द प्रैक्टिस इज हार्ड. आई हैव नेवर सीन एनी पर्सन बिकमिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज हु इज लेस देन 50. तो जनरली 50 के प्लस ही होते हैं. हाई कोर्ट के जजेस भी 40 प्लस ही बनते हैं. बट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ और द जजमेंट सीज इज वेरी गुड. Azija, fantastic. That is what I wanted. There is no minimum age criteria for a Supreme Court judge. ठीक है. Now the question is, लेकिन उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है ना, जैसे you should be a 10 years high court judge, है ना, a 5 years high court judge, 10 years lawyer, है ना, ये सब है. These are the conditions. मतलब ये क्या कोई अब someone will say कि sir a child born can become a Supreme Court judge? No, because you need this designation. You should have at least worked as 5 years as a high court judge or 10 years as a lawyer, etc. तो पैदा हुए बच्चा तो नहीं बन सकता, ये तो श्योर बात है. लेकिन ये सब की कंडीशन चाहिए, ठीक है. बट द थिंग इज, a person can get those eligibility criteria fulfilled in his 30s only. मान लीजिए कोई 37, 38 years का है, वो हो सकता है कि 10 years lawyer रहा हो, है ना, बट स्टिल 37, 38 या 40 years में जनरली कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनते. जनरली इट इज 50 प्लस. द प्रैक्टिस इज दिस, है ना. हाँ, so that is what you should be knowing. Let's move on. Right to information was enacted in which year? अभी हम लोगों ने आरटीआई की बात की कि आरटीआई 2-3 बार पूछा हुआ एग्जाम में. That's why we are discussing. 2009, 2005, 2006, 2008. हाँ, the right answer is B, 2005. ठीक है. So just have an idea, है ना. Passed by the parliament 2005 में. The next is World Environment Day is observed on which date? 5th June, 6th June, 7th June, 8th June. What is the right answer? And why? Reason ही बताना है. World Environment Day. अच्छा, इससे रिलेटेड हम 3-4 चीज आपसे पूछेंगे बिकॉज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. व्हाट वाज द थीम दिस ईयर एंड हु ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दिस ईयर? चलो पहले एस्टैब्लिश करो, पहले ये आंसर करो. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे व्हेन डू वी सेलिब्रेट एंड व्हाई? ये पहले आंसर करो. यस, अद्रिजा एंड सिद्धि, व्हिच यू बोथ आर राइट. द राइट आंसर इज 5th June. UNFCCC was established. No. That is not the reason. Why do we celebrate World Environment Day on 5th June? Very very important. World Environment Day बहुत important है. And अब पूछोगे सर डेज और थीम्स पूछते हैं एग्जाम में? Yes. See the CLAT 2021 paper. You will see days and themes were asked twice in one paper. 2 जगह days and themes पूछे थे. World Wetland Day और एक और था, कौन सा डे था? I'm not able to recall, but yes, at 2 places they had asked. Agenda 21 नहीं, not related with that. Host Republic of Korea, right? Johnny Jose, you are right. South Korea hosted this year. But the question I'm first, please answer the question. Why do we celebrate 5th June as World Environment Day? पहले आप इसका आंसर बताइए. At least paid batch student, I remember I taught in paid classes. कोई तो बता दे. 5th June 1972, what happened? 5th June 1972. Our land, our restoration. नहीं, जॉनी जोस, इस साल का जो थीम था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. ठीक है, 2025 का जो थीम था. 5th June 1972, what happened? देखो ना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. एनवायरनमेंट डे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, है ना, वाज द थीम दिस ईयर. 5th June, मैं ही बता देता हूं, जाओ चलो. So 5th June 1972, Stockholm Conference happened. Stockholm Conference, ठीक है.
स्टॉकहोम में हुआ. अब ये पूछिए मत कि कहां हुआ. स्टॉकहोम इज अ प्लेस इन स्वीडन. ठीक है, वेयर इट हैपेंड. इट रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ओके, अब आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है कहां पे. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. And it was formed in 5th June, and that is why also, so दोनों रीजन से 5th June is celebrated as World Environment Day. ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दिस ईयर वाज सेलिब्रेटेड. एक कंट्री होस्ट कंट्री होती है जो सेलिब्रेट करती है. साउथ कोरिया वाज द होस्ट कंट्री. एक्चुअली रिपब्लिक ऑफ कोरिया लिखा रहेगा, सो डो नॉट गेट कंफ्यूज. रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज नथिंग बट साउथ कोरिया. ठीक है, एक चीज और बताना था. हाँ, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर 2025. सो 2025 का जो थीम था वो था हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. ओके, I hope you understand प्लास्टिक मुसीबत बना हुआ है ना. So of course we need to eliminate that, है ना. Beat plastic pollution. हाँ, very good. Nairobi, yes. सिद्धि विच एंड जॉनी जोस, यू बोथ राइट. यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो है नायरोबी. नायरोबी NAI होगा ना, एक बार स्पेलिंग देख लेना. नायरोबी, आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग. केनिया इन साउथ इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. ठीक है, ओके. सो वी टॉक अबाउट दिस नाउ. एक और सवाल है, तो चूंकि हम लोग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज बैंड इन इंडिया. एक खास किस्म का है जो विच इज द मोस्ट डेंजरस प्लास्टिक. सबसे मोस्ट डेंजरस प्लास्टिक जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं SUP. जानते हो ये क्या होता है? एनीवन? These are strictly regulated and prohibited in India. SUP. Yes, single use plastic. It's very deadly. ठीक है, अब देखना इंडिया में लॉज है बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली इट इज बीइंग यूज्ड इवन दो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस. ऐसे समझो सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा, जैसे मान लीजिए आप कोई पानी का बोतल लेते हो, उसको पी करके जो फेंक देते हो ना, जो वो पतला प्लास्टिक वाला आता है, दैट है ना, जस्ट टू ड्रिंक फॉर वंस एंड थ्रो इट, वो वाला जो बनता है वो SUP सिंगल यूज प्लास्टिक से जनरली बनता है. ठीक है, सो ऑफ कोर्स आई मीन इट इज टू डेडली. ठीक है, प्लास्टिक्स, द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक इज, हाँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC वगैरह. प्लास्टिक में समस्या क्या है? मेन प्रॉब्लम है इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, प्लास्टिक अभी इस साल का थीम है ना, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मेन प्रॉब्लम विद प्लास्टिक इज इट इज नॉन डिग्रेडेबल. क्या मतलब हुआ? नहीं, केमिकल्स के नाम नहीं पूछेंगे. पॉलीविनाइल क्लोराइड, लेस चांसेस मे बी, बट एक कॉन्सेप्ट है कि सिंस बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इज इन द न्यूज, यू शुड नो अबाउट प्लास्टिक्स एंड ऑल, है ना. when we say that when people say कि plastics are too dangerous, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत नुकसानदेह एक्सेट्रा, तो उसका रीजन ये बताया जाता है कि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. जैसे जैसे आई टेल यू, जैसे शॉप में कई बार क्या होता है कि प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए आपको कागज मैंने पेपर के उसमें बना के देते हैं ना, पेपर का जो वो वॉट एवर इट इज लाइक, है ना, पैकिंग मटेरियल इज मेड ऑफ पेपर इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक. बट व्हाई? यस, महेंद्र एंड सिद्धिविज, वेरी गुड. हाँ, जॉनी जोस. हाँ, तो प्लास्टिक जो होता है ना और पेपर में डिफरेंस क्या होता है? तो पेपर जो गल जाएगा आसानी से, हम लोग हिंदी में कहते हैं गल जाएगा, यानी कि आसानी से बायोडिग्रेडेबल है ना. प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. देखो इसमें वर्ड में ही बहुत सारी चीज छुपा हुआ है ना. तो बायो का मतलब क्या होता है ना, बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे कोई चीज पुरानी हो जाती है, बैक्टीरिया उसको गला देती है ना. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का की बॉडी देखोगे, लेट्स से एन एनिमल डाइड इन द फॉरेस्ट, तो क्या होता है? बैक्टीरिया आते हैं, उसमें दूसरे जानवर आते हैं, खा लेते हैं. नहीं, कोई भी नहीं खाए तो बैक्टीरिया आके उसको डिकम्पोज कर गया. ओके, तो पेपर भी डिकम्पोज कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है. प्लास्टिक के साथ ये 1000 ऑफ ईयर्स तक वसी रहेगा मट्टी के अंदर. It will, if you have manufactured the plastic, it will remain inside the soil for thousands of years. That's the problematic thing. दूसरी चीज ये कि देखो होता क्या प्लास्टिक में, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? अब प्लास्टिक गलता नहीं, मान लीजिए क्या होता है, बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं ओके सराउंडिंग्स में. अब मान लीजिए कोई एनिमल खा लिया उसको mistakenly. For example, if a cattle eats, its stomach will not be able to digest.
मान लो गलती से पेपर खा लिया तो भी ठीक है, वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर ले, कैटल ने, मान लीजिए कोई काव है या बफेलो, उसने पेपर खा लिया, इट हैज मिस्टेकनली ईटन अ पेपर, तो भी ठीक है, कुछ हद तक डाइजेस्ट कर लेगा, मतलब ये स्टमक। लेकिन प्लास्टिक खा लिया तो डेडली, इट बिकम्स क्वाइट डेडली, एंड ऑफ कोर्स इट कैन कॉज लाइक इवन डेथ्स ऑफ कैटल और समथिंग लाइक दैट. Okay, that is also the reason कि plastic से even cattles are also getting affected. That is also the thing. और प्रॉब्लम ये होता है कि कैटल कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, कैटल डज नॉट नो कि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल और समथिंग लाइक दैट, है ना. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट. अब हमको एक और सवाल पूछना है, सिंस पीपल वर टॉकिंग अबाउट दैट. अर्थ इसे इन्वायरमेंट समिट से रिलेटेड 1992 में एक समिट हुई थी. प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट समिट रिलेटेड विद इन्वायरमेंट. हाँ, फूड चेन में घुसाते, राइट महेंद्र, राइट. हाँ, 1992 में एक इन्वायरमेंट समिट हुई थी, दैट यू शुड बी नोइंग. हाँ, रियो समिट कहते हैं, RIO, रियो समिट. मैं क्यों बता रहा हूं ये अभी राइट नाउ. रियो समिट, एजेंडा 21, अर्थ समिट, राइट, वेरी गुड. सेम थिंग इज कॉल्ड एज अर्थ समिट. Tomorrow we'll be having a session on revision of monthly current affairs 3 PM पे, और Tuesday को we'll be having session on BRICS. ये अगेन ब्राजील में होने जा रहा है, राइट. तो रियो न्यूज में रहेगा, ब्राजील रियो, दिस विल बी इन द न्यूज अगेन. ठीक है, और इनफैक्ट इस साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज आल्सो दिस ईयर हैपनिंग, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना. तो रियो समिट विल बी न्यूज. एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आफ्टर द क्लास इज ओवर आप यूट्यूब पे जाना, सर्च करना दिस एनवायरमेंटल समिट्स career launcher. You search this on YouTube, career launcher law entrance. Okay, आपको एक ग्रीन कलर का थंबनेल का वीडियो मिलेगा, प्लीज वॉच इट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कई जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, सो आई वुड सजेस्ट प्लीज वॉच दैट वीडियो आल्सो. ठीक है, एंड विल बी हैविंग क्लास टुमारो एट 3 PM. मई का करंट अफेयर्स रिवाइज कराऊंगा, एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी हैविंग अ ब्रिक्स क्लास, बिकॉज PM मोदी इज देयर, है ना. विल बी हैविंग अ ब्रिक्स समिट. So this is all about today's class. Thank you everyone. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.